जैसा हुस्न जो पाया, हर अदा में नूर है आया, साथ मरे और 77 गाया, प्रेम तो रब को क्यों ऐसा बनाया। तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला, तेरा नहीं तेरा कोई दोष, दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त। हो जाए, क्योंकि जब तक आपका स्किन का बेस मेंटेन नहीं होगा तो वो मेकअप करते हुए ड्राई हो जाएगा, फटेगा, किसी कुछ इश्यू आता है। तो क्योंकि ब्लीच और फेशियल हुआ होता है तो हमारा डर्मिस लेयर पील हो चुका होता है। हर क्लाइंट को जब इनका कोई फंक्शन होता है, देखिए रेडी कब होता है बंदा, जब उनके घर पे फंक्शन होता है। फंक्शन होने के लिए वो सब लोग फेशियल ब्लीच कराते हैं। तो फेशियल ब्लीच जब हम कराएंगे तो जो हमारा डर्मिस लेयर होता है वो पील हो जाता है। उसके ऊपर आपने देखा होगा निधानी सर आपको एक एक टेक्निक पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से समझाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपोजिट मोशन में इसे स्ट्रेच करना है, देन विद द हेल्प ऑफ स्पूली आउटवर्ड्स मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में। Use 2 drops. आपने देखा होगा फेस हमने क्लीन कर दिया है, अब इसको स्किन के अंदर निधानी सर तो ठीक है अप्लाई कर रहे हैं, बट इसको स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करना है। समझ रहे आप? आईज के नीचे, फोरहेड जहाँ हमारा ज्वेलरी टिका होता है, नोज के पास, हमारे नोज के साइड में जहाँ सीरम रिलीज होता है, तो जो टारगेट एरिया है उसके अंदर अच्छे से Then this is small brush from PAC for under eyes concealing. नहीं, इसमें कोई 15 मिनट नहीं छोड़ना, डायरेक्ट स्किन में पेनिट्रेट करके कंसीलिंग। For the under eyes concealing, as you can see कि डार्क सर्कल्स थोड़े ज्यादा हैं, तो मैं हुडा ब्यूटी का डार्क कंसीलर ले रहा हूँ in the shade salted caramel. And this brush is from PAC. आपने देखा होगा हमने कोई सीटीएम नहीं किए हैं, राइट? तो इसमें सीटीएम नहीं करना है, स्पेशली फॉर समर। जब आप विंटर में ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तब आप सब कुछ यूज कीजिए, क्योंकि समर्स में स्वेटिंग इशू रहता है। तो दैट्स व्हाई कि हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका टेक्निक थोड़ा सा हमने चेंज किया है। बट विंटर में हम ये प्रोडक्ट जैसे हम लोग पूरा सीटीएम के साथ करते हैं वैसे ही यूज करना है। पहले प्राइमर लगाना है, फिर उसके बाद सारा जो भी अपने प्रोसेस करना होता है विंटर्स में वो कर सकते हो। उसमें
हो गया, नाश भी करते हैं कुछ लोग, या जो भी सिलिकॉन बेस्ड और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो सब आप समझ के यूज करते हैं। जो भी आप समझ में यूज कर सकते हैं वो आप प्राइमर के साथ भी यूज कर सकते हैं समझ में। I am using this foundation application brush from PAC. रिकॉर्ड में भी जा सकते हो, ऐसे कोई नॉर्मल ऐसे बना के ऐसे नहीं है, बहुत प्रीमियम फॉर्नर स्किन के लिए ये इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जो हमें इसमें डाले हैं। And with the help of blender, बहुत ही हल्के मोशन में ब्लेंड करना है। And make sure कि आपका blender डैब होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। आपको अलग अलग चीजें नहीं लेनी पड़ती है, सिर्फ आपने देखा होगा प्राइमर के बाद सिर्फ कंसीलर फाउंडेशन लेना। तो मैं चाहूंगी, देखिए क्लाइंट का पैसा तभी देता है जब उसको अच्छा काम मिलता है। और जब आप अच्छा काम दे रहे हो उसे 1000 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, 20 पूछ रहे हैं कहाँ से रेडी हुआ, कहाँ से रेडी हुआ। तो अपने काम में थोड़ा सा क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी है। थैंक यू। Then I'm using this Fenty Beauty contour and the shade Truffle. Then I'm using liquid lip shade. जरूरी नहीं है कि आपको लिक्विड ब्लशर ही लेना है, आप कोई भी ऑयल कंटेंट लिप शेड ले सकते हैं। स्माइल बहुत ही स्मूथली चीक बोन्स पर विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्रश अप्लाई करना। बहुत ही हल्का we will apply the highlighter. This highlighter is from Anastasia and the brush is from Beautician. Anastasia, the shade is Glow Seeker. Glow Seeker. Then I'm using the powder from Laura Mercier. पाउडर आपका अच्छा क्वालिटी का चाहिए। लारा बेस को लॉक करना है। Step is हम वाटर अप्लाई करेंगे ऑल ओवर द फेस। पूरा पानी का स्प्रे करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। छोटा सा हाइलाइटर ब्रश। Then for pink highlighter, I'm using Too Faced.
using this loose powder from Laura Mercier under the eyes. And I'm using this tarte concealer, the shade is fair. वही सेम कंसीलर जो हमने बेस पे एप्लीकेशन किया था. I'm using this Recoat Studio Pro 18 color palette है liquid shades में. This is basically lip shade palette, but ऐसा eye shadow के लिए liquid eye shadow के लिए I'm using this. मेरा भी सर लिक्विड using this PSC glitter glue glitters को stick करने के लिए मैं